Okay, Ji, so we started this lecture the last week, and I asked you people about what is the lecture's topic. So all of you mm, know about this lecture, which is about fluid statics. So can anyone just briefly describe about this fluid static means? Ji, Vijay? The fluid statics means the fluid at rest, or it is a branch in which we study of fluid that is at rest. And can you give an example? An example? Sir, Dams. fluid in any confined container, Yes, very good. water tank, etc. Water tank. Also, there is also an example of water reservoir, just on the upstream side of a hydraulic dam. So normal force produced by static fluid are often very important, and even just like they even tend to overturn concrete dams, etc. So the main driving force is the when the fluid is at rest, there are no shear stresses. Okay, the only force is the normal force due to pressure is present. So the only force which is acting on its boundaries is the pressure force. Just like if this is the container, so the pressure force will act perpendicular to its boundaries. Okay, so greater the depth, greater would be the pressure force. So if I ask you that what would be the pressure distribution diagram for these three walls, will it be uniform or will it change? कौन बताएगा? So for wall 1, what would be the pressure distribution diagram? जी बच्चे. So the pressure distribution diagram would be like this. You can say. Yes, no, ऐसी होगी for wall 1, Yes, sir. and similarly for wall 2. बेसिकली ये इधर होनी थी लेकिन जगह की वजह से मैंने इधर बना दी. ठीक है. And similarly for wall 3, the pressure distribution would be exactly uniform. Okay, so as obviously for this particular point, this much height would be used in order to find the pressure. Okay, so now what is pressure? Pressure is defined as force by unit area, the amount of force exerted on a unit area of a substance or on a surface. So this can be stated by this following question: P is equal to F over A for finite area, and if we have infinite area, then we just take the unit strip out of it. For example, we just take this differential area dA, and if we know the area, then we can just simply integrate from 0 to
total area. So P is equal to dF over dA, and the units of pressure as Newton per meter square, which is pascals. Pounds per foot square PSF, and pounds per inch square is PSI. So this is normally a very common uh, unit for pressure, PSI, which is equal to pounds per inch square. So any question in the first slide? No sir, आगे चलें. So few of the examples, I mean, the Myanmar's dam failure was actually due to excessive water pressure, and which resulted in the breaking of, or you can say, uprooting of this dam. So usually there is an uplift force as well if there, depending upon the self weight, but at the moment we are not considering this thing. So water load is the main factor which actually overturns this dam. A very simple example, a load of 200 pounds is exerted on a piston confining oil in a circular cylinder with an inside diameter of 2.5 inches. Compute the pressure in the oil at the piston. So first of all, as we need to find this pressure, so what is the formula for pressure, which is pressure is equal to force per unit area, and area is, say we have a circular cylinder and this is the total area. Okay, so pressure is acting in this direction. So simply by using pi d square by 4 or pi r square, we can find the area, and we know the force which is acting on this cylinder, which is equal to 200 pounds. So simply we can find the pressure. So two very important principles regarding the pressure, which were described by first principle is by Blaise Pascal, a 17th century. According to him, the first principle states pressure acts uniformly in all direction on a small volume of a fluid. For example, if we have a very small volume of a fluid, then there would be a same pressure acting from all of the sides. Okay, pressure acts uniformly in all directions on a small volume of fluid. And second principle states, in a fluid confined by solid boundaries, pressure acts perpendicular to the boundary. So this principle you can easily understand by looking at these figures. Pressure acts perpendicular to the boundary. अब यहाँ पे देखें, just like in the first example, in a rectangular duct, pressure acts perpendicular. Okay, similarly in a pipe or a tube, whatever the side it is, the pressure would be uniform. Say just like this one. You can see here the pressure is not like this. So whatever the surface, the pressure will be acting perpendicular, means at 90 degree. Just look at the dam here, swimming pool, etc. Any question? No sir. So now we are going to mathematically prove how the pressure acts at a point
and is same in all direction. Okay. So consider a wedge-shaped element of a fluid at rest. Wedge means a triangular shape. So in three-dimensional, it is like this. Okay. कुछ इस तरह बनेगा ये figure. Consider a wedge-shaped element of fluid at rest. Thickness is dy perpendicular plane. So this thickness is dy. Okay, you can say this one. Here dy. Let P would be the average pressure in any direction. This P pressure acting from the top in any direction. Px and Pz are the average pressure in horizontal and vertical direction. Px is the horizontal pressure and Pz is the vertical pressure. And we know that in order to transform the pressure in force, we just multiply with the cross-sectional area. For just like if I say just convert the px into force in x direction, then simply multiply with the area, this one, and the area is this dy cross dz. dy cross dz. Similarly, when you change this pz into force, then multiply with the dx and perpendicular depth, which is dy. Okay, and similarly p, if we transform this p, which is at any direction, we do not know the angle at the moment, just multiply with this dl and perpendicular depth dy. Okay, there is also another force, which is the weight of this wedge shaped fluid element and is acting exactly in the downward direction. And we know that gamma is equal to weight per unit volume. So when we find the weight, it would be W is equal to gamma into volume. So here gamma and dx, dy, dz is the volume, and 1 by 2 is for triangular shape. Okay, dx, dy, dz is the volume of rectangle shape. And if we want to find for this particular triangle, then just divide it by 2. So this becomes the weight force which is acting in the downward direction. So any question regarding the forces which are involved in this figure? जी No, बच्चे. sir. Okay. So यहाँ तक clear हो गया. Fifth point says forces in y direction need not be considered because they cancel. Y direction कौन सी है भाई इसमें? Say this is xy and this one is sorry xz and this one is y. Okay, so for example, if this is the wedge, so the amount of force which is acting in this direction, say it is positive, so the same amount of force would be acting from the from its back side, and this would be negative. So this will cancel each other, means both the forces will have the same magnitude, therefore they cancel. So at the moment we should not we do not need to consider the y direction forces because they cancel each other. So no tangential force is involved since the fluid is at rest, and we have discussed
this here, as there are no shear stresses. The only force is the normal force due to pressure is present. So this is the major, you can say, restriction for this fluid statics. So now, just like you did in engineering mechanics, summation of all the force components on an element in any direction must be equal to 0, and this is an equilibrium condition. So first of all, we would summation of all the x forces equal to 0, and looking at this figure, which forces are in the x direction? Who will tell? जी बच्चे. सर px dy dz और px d by dz, very good. Okay. वो जो ऊपर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रही है p dl dy का हम cos अल्फा ले लेंगे और ठीक है, but okay, but this is not the tangential force, this is the normal force. normal force. Yes, so just p, you can see that if you make a triangle, then the alpha side, this one is the base. Okay, so p cos of alpha times dl dy, this is the first force, and the second force is, since this is acting in the rightward direction, and according to this figure, we usually take the rightward and upward forces as positive. Okay, so p cos of alpha dl dy, we take it as positive, and the other force p x dy dz, we take it as negative. Okay, and if you look at this figure, the alpha is here, and you can also write dz is equal to dl cos of alpha, just like looking at this figure, cos of alpha for this particular wedge would be base, and which is base dz over dl. Okay, so from this you can easily find dz, which is equal to dl cos of alpha. Okay, any question up till here? So just replace dz here with dl cos of alpha, and you, after cancellation, you will see that p would be equal to px. So it, on the answer is p minus px, it could be equal to 0. So p is equal to px. So you can see that this p pressure, which is acting perpendicular on this surface, the magnitude of this pressure is same as that of px. So which is the statement of Pascal's law that pressure at a point is same in all directions. Similarly, when you take summation of all the z forces, then z forces would involve pz dx dy first force, another force p dl dy sine of theta in terms of sine theta, and the third force is the weight force. So these are all acting in the z direction. Okay, so when you take the summation of all the forces, and just similar to dz here, you can also write dx is equal to dl sine of theta, and neglecting third term due to higher order, as the influence of higher order term is very less in the whole equation, therefore neglecting the third term due to higher order, so p is equal to pz. So in point 8, we proved that p is equal to px, and here in 9, p is equal to pz. We can also prove p is equal to py by considering a three-dimensional case. So thus a pressure at any point in a fluid at rest is same in all direction, means p is equal to px is equal to py is equal to pz.
Okay, so this is the first principle of pressure of fluid statics, that pressure at a point is same in all direction. Any question? No sir, clear है. Okay, so a major application of Pascal's law is that by applying a small force, we can easily lift this, you can say, heavyweight car. So the principle states that F1, say P1 is equal to P2. Okay, so P is F1 over A1, which is equal to F2 over A2. So we know the area of both these cylinders. So say A1 is less here, A2 is greater here. So if we know this F2, we can simply find F1 here. Okay, आगे example करते हैं, उससे समझ आ जाएगी. So the mechanics of pneumatic jack used in a service station is shown in figure 2.3. If the car and lift weigh 5,000 pounds, so this car and this lift, its total weight is 5,000 pounds. Now we need to find the force, determine the force that must be developed by the air compressor at B. Here it is a B point, to raise the lift at a constant velocity. Air is in the line from B to A. So this is point A and this is B. So we have air as a fluid in this line. Air in the, okay, the air line at B has an inner diameter of 1 inches. So we can say that the area at this point is 1 inches and the area at point 2 is 12 inches. Okay, हमने find क्या करना है, determine the force. We have to find. सर ये तो जी सर ये 1 और 12 तो डायामीटर नहीं होगा, एरिया तो नहीं होगा. Sorry, very good. So this is diameter. Thanks for correction. But we can find simply area in terms of diameter. Okay, so diameter means you can easily find area. Okay, so that's what I was thinking. ठीक है जी, पाई डी स्क्वायर बाय 4 करके अब एरिया निकाल लेंगे दोनों का. कैसे करेंगे भाई, कौन बताएगा? सर अब Yes. इन केस A2 में है, मतलब डायमीटर 12 इंचेस है, तो इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करके पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो वो ज्यादा सिंपल रहेगा. एरिया पाई, ठीक ठीक हो गया वो, ये बहुत सिंपल चीज है. मैं पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे. सर ये जो पीछे आपने फार्मूला बताया. मैंने क्या नहीं, बताओ ना कौन क्या फार्मूला है. सर हम दोनों साइड के प्रेशर इक्वल कर देंगे, अब फोर्स ओवर एरिया दोनों तरफ से. दोनों साइड्स में प्रेशर इक्वल है, ठीक हो गया जी. सर FA over A, area at point A, is equal to force at point B over area at point B. ये ठीक है जी. सो F1 हमने जो है, हमारे पास गिवन क्या है, इसको मैं 1 कह रहा हूं. ठीक है जी, सॉरी, जो A पॉइंट है जहां कार है,
इसको मैं 1 ले रहा हूं और बी पॉइंट को मैं 2 ले रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स जो है वे जो है वो 5000 पाउंड्स है, ठीक है। हाउ कैन आई फाइंड द प्रेशर? जी बच्चे, by dividing it by area. वेरी गुड। F2 फाइंड करेंगे सर। सिंपली मैं इसको कह दूंगा कि 5000 डिवाइडेड बाय पाई, वो उसका क्या था 20 इंचेस था, पाई डी स्क्वायर बाय 4। मेरे पास प्रेशर आ जाएगा कोई भी प्रेशर। 12। क्या प्रेशर आ रहा है? मेरे पास प्रेशर आ रहा है 44.21 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर, ओके। So this is the P1 or PA, whatever it is. So the same pressure would also be acting at point B or point 2. P1 is equal to P2 is equal to F2 our A2। इसको मैं कैसे लिख लूंगा? 44.21 is equal to F2 divided by pi 1 square by 4 किया, and after solving I simply get the value of F2. Since the weight of air is neglected, the pressure at each point is same at all direction according to Pascal's law, and the same pressure is transmitted to B. Therefore, the force at B is FB over AB. So we require a 34.7 pounds force to lift 5000 pound load, even though the pressure at AB is same. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी का? अब देख लें, कंपेयर कर लें कि इतने 5000 पाउंड को उठाने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर है वो सिर्फ 34.7 पाउंड्स फोर्स रिक्वायर है। So this is the major application which is used to lift the car by applying a smaller force. Any question? नो सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या था भाई? रेट, ओके। अब हमने ये प्रिंसिपल पढ़ लिया, प्रेशर यूनिफॉर्मली हो रहा है और बाउंड्रीज पे भी लग रहा है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हम कौन सा पढ़ेंगे? हाउ मच इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर दैट वुड अकर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ अ फ्लूइड। जस्ट लाइक इन द स्टार्ट I asked you to plot the pressure distribution diagram, and all of you were agreed that the pressure distribution diagram is somewhat like this. ऐसे ही था ना जी? Means that pressure increases as we move down the fluid, or you can say as we move down the water body. So rate of increase of pressure in vertical downward direction must be equal to specific weight of the fluid at that point. ये हमने prove करना है. Rate of increase of pressure in vertical downward direction must be equal to specific weight of fluid at that point. Okay. So you just consider a fluid element. This time the author has considered a cube shaped fluid particle, and let us assume that consider a fluid element
an element of static fluid. Okay, assume density of a fluid to be constant within the element. Okay, means इस पूरे पार्ट की डेंसिटी जो है वो सेम है. Pressure at the center of the element is P. So this is the line, center line. Pressure at this point is basically the pressure acting at this point is P. ये याद रखना, ठीक है. P से ऊपर जो डिस्टेंस है इस साइड का वो क्या है? डेल्टा Z बाय 2. सिमिलरली P से नीचे जो इसकी हाइट है वो भी क्या हो जाएगी? डेल्टा Z बाय 2. टोटल क्यूब की हाइट क्या है? डेल्टा Z. एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो सर. नो सर. ओके, सेंटर पॉइंट पे ऑब्वियसली हमने देखा है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, which is equal to gamma is equal to weight per unit volume. So just multiply gamma with the volume. Gamma delta x delta y delta z. अब delta x delta y delta z तीनों sides के distances हैं. Okay, so this one is delta z, this one is delta y, and this one is delta x. Okay, so here it's written delta y, delta z, delta x. अब ये दो पॉइंट्स समझने वाले हैं थोड़े से, ये ट्रिकी हैं थोड़े से, ये दोनों. मैंने कहा था कि सेंटर पॉइंट पे प्रेशर P है और इससे ऊपर हाइट डेल्टा x डेल्टा z बाय 2 है और नीचे डेल्टा z बाय 2 है. सो ओके, एट द मोमेंट वी डू नॉट नो कि प्रेशर जो है वो ऊपर अगर हम जाएंगे तो ज्यादा होगा या नीचे जाएंगे ज्यादा होगा. At the moment we do not know. This is the point which we are going to prove. So at the moment we have assumed that as we move as we move above this point P, pressure increases. Okay, and as we move below this point P, we assume that pressure decreases. Okay, and how much is the increase and how much is the decrease? Simply if we want to transform pressure into force, what we usually do? जी बच्चे, if we want to transform this pressure into force, what should we do? सर क्रॉस-सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें. वेरी गुड, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया क्या है? मैं भी ऊपर हम फाइंड आउट कर रहे हैं. इसका एरिया क्या है? सर डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा y. वेरी गुड. सो डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा y इज द एरिया. If we just simply multiply P times this delta x and delta y, so it means that the pressure is same at this particular point, pressure is same at above side. इस अगर हम यही प्रेशर, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगी. If we say that this same pressure is एक्टिंग एट दिस हाइट एज वेल, हाइट का रोल नहीं है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं अभी हमें नहीं पता कि प्रेशर कितना बढ़ रहा है. सो वी रिप्रेजेंट चेंज इन प्रेशर, चेंज ऑफ, और यू कैन से रेट ऑफ change of pressure with respect to height z और with respect to z. हम इसको किससे रिप्रेजेंट करें? डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा z.
Okay, this particular part. So this is basically rate of change of pressure with respect to Z. And now if we want to find the total pressure, so this is the unit change. Basically delta P or delta Z is the unit change for very small element. If you want to find this total pressure, just like हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो हमें इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे. In order to find the total pressure, we just multiply dP over dz times distance. और इसका डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? कौन बताएगा? डेल्टा z by 2. Delta z by 2. Very good. Delta z by 2. So P is a pressure which is at the center, and if we have assumed that as we move upward there would be an increase, and how much is the increase in pressure? Change in pressure in z direction times the distance. Delta P over delta z times delta z by 2. Okay. Similarly, we can also write it as same P minus dP over dz times delta z by 2 or ये area. As we have assumed that moving downward will decrease the pressure. Any question in understanding this figure? सर ये डेल्टा z by 2 वाला दोबारा एक बार सुन. Okay. हमने assume किया है, I mean we have in the it states pressure at the center is P. At the center is P और total height क्यूब की जो है वो डेल्टा Z है. तो अगर सेंटर पे P है तो इसके ऊपर वाली हाइट कितनी हो जाएगी? डेल्टा Z by 2. सिमिलरली नीचे वाली हाइट कितनी हो जाएगी? डेल्टा Z by 2. ओके. अब मैंने क्या कहा है? ठीक हो गया? आगे तो नहीं समझाने की जरूरत? ठीक हो गया, समझ गया. ओके. और किसी का कोई क्वेश्चन? Okay, I will move forward. Pressure at the center element is P. Dimensions of the element are ये बता दिया मैंने, delta x, delta y, delta z. Force acting in the vertical direction. अब ये भी हमने देख लिया क्या है जी. Body force, the action of gravity. अब ये इसमें basically weight force आ जाएगी. And the second is the surface force, which is due to the surrounding fluid pressure force. अब इसमें एक this one is the body force or weight force, and these are the surface forces. If the forces are summed in horizontal direction, then x and y, the only force acting are the pressure force on the vertical face of the element. अब अगर हम इस फेस की बात करें, क्योंकि this is the cube, ये सारी forces जो जितनी भी लग रही है प्रेशर की इस जगह से, it will be same as that this side. Yes, no? So delta Z की forces and delta ये डेल्टा x की forces और similarly जो ये वाला फेस है, ये जो फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स बैक साइड से कैंसिल हो जाएगी और इस फेस पर जो फोर्स लग रही है वो इससे कैंसिल हो जाएगी. सो द ओनली फोर्स इज which is acting in the z direction.
So summation of f of x is 0, f of y is 0, the pressure on the opposite vertical face must be equal to 0. So therefore thus delta p over delta x, p over delta y is 0. ये पॉइंट मैंने जो अभी आपको कैंसिलेशन का बताया वो इसमें कवर हो जाता है. Summing forces in the vertical direction putting it equal to 0, sum of summation of fz. अब ये जो है वो upward force हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव. सो ये वाली फोर्स हमने पॉजिटिव ले ली और बाकी अपवर्ड प्रेशर एंड वेट ये नेगेटिव हो गया. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड इग्नोरिंग द थर्ड ऑर्डर टर्म, सो अब इसको आपने इस इक्वेशन को ओपन कर लेना है. ठीक है जी. जस्ट लाइक मैं सिर्फ एक इसका बता रहा हूं, P डेल्टा एक्स डेल्टा वाई माइनस dp over dz delta z by 2 delta x delta y. इससे जब ये वाली भी ओपन होगी तो ये वाली पार्ट जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है. ठीक है जी. और बाकी भी इसी तरह आप देख लेंगे. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट dp over delta z is equal to minus gamma. Why we have a negative sign here? This also shows that the assumption which we have assumed for this particular part, this one, if we consider this as negative and this as positive, then our answer would be dp over dz is equal to gamma. Okay. Yes, sir. So this is basically the symbol is for partial derivative. Okay. And this D represents ordinary differentiation. So what is the difference between partial differentiation and ordinary differentiation? Mathematics में आपने पढ़ा होगा अभी. जी बच्चे. सर पार्शियल जो डेरिवेटिव होता है वो हायर ऑर्डर इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं. और ऑर्डिनरी? So partial differentiation is used to differentiate mathematical function कोई भी हो. For example, dp is our mathematical function having more than one variable in it. For example, dp over dx, dp over dy, dp over dz. So partial differentiation is used to differentiate mathematical function having more than one variable involved in it. However, in ordinary differentiation, we find derivative with respect to one variable only. For example, if I write dp, then there would only be, say, either it is dp over dx, or it would be dp over dy, or it would be dp over dz. So this one is partial and this one is ordinary. It's represented with this sign and small d. Just like, say, this p, if p is changing in x direction, y direction and z direction, then we will go for partial derivative, this one. And if p is changing only in one direction, say z in our case, okay, p is only changing in z direction, then we can simply transform this partial to d. Okay, ये मैंने नीचे नोट्स में डिस्क्रिप्शन लिख दी है.
So since P is independent of X and Y, we can write above equation as dP over dz is equal to minus gamma. So this is the general expression that relates variation of pressure in a static fluid to vertical position. Okay, variation of change in pressure in z direction, it is equal to the specific weight of the fluid, which was the statement here as well. Rate of increase of pressure in vertical downward direction must be equal to specific weight of the fluid at that point, is equal to this rate of increase means dP over dz, it is equal to specific weight of the fluid at that point. At that point means जिस point पे z ले रहे हैं हम उस point पे specific weight of fluid होगा. The minus sign indicates that as z gets larger, increasing elevation, the pressure gets smaller. Means कि अगर हम हमारा datum bottom पे है, say this is datum, we usually take elevation by moving upward. So the minus sign indicates that as z gets larger, means increasing elevation, the pressure gets smaller. So to evaluate the pressure anywhere in a fluid at rest, we must integrate previous equation between appropriate chosen limits. So इसको हम इससा भी लिख सकते हैं, ये dP over dz था is equal to gamma था, तो हमने इसको gamma into dz कर लिया. So we take the integration in order to find the total pressure. So then the answer would be P is equal to gamma z. We usually represent height in terms of h. So z basically सिर्फ notation का difference है. Okay, as we usually denote head in terms of h. Okay. So say z is equal to h, so P is equal to gamma h. ये आपने फॉर्मूला याद रखना, P is equal to gamma h. And from this we can also find that h is equal to P over gamma. So and h is the pressure head. अगर आपसे कोई पूछे what is the pressure head, तो आप क्या बताएंगे? हाइट. सर जिस हाइट पे अगर आपसे कोई पूछे what is head, तो क्या बताएंगे? It is basically pressure expressed in terms of height of, okay, pressure expressed in terms of height of fluid is called pressure head. अब ये pressure expressed in terms of height of a fluid. अब इसको समझने के लिए the term elevation means the vertical distance from some reference level to a point of interest and is called z, या h भी आप इसको कह सकते हैं. ठीक है जी. A change in elevation between 2 points is called h. Elevation will always be measured positive in the upward direction. इस फिगर को देखें. Say this is, sir? Okay. Say this is our reference in which z is equal to 0, and as we move upward, we see that z is positive 60 meters. Okay, and if we take this reference at this particular point, then this one is 90 and this one is minus 60. I hope, this is clear to you. Height, किसी भी reference से आप अगर कोई भी height लेंगे, that is your elevation. So what is pressure head? It is the pressure expressed in terms of
height of fluid, pressure head, H is equal to P over gamma. And it is basically H is equal to P over gamma represents the energy per unit weight, stored in a fluid by virtue of pressure under which the fluid exists. This is also called as elevation head or potential head, or even total head तो हम इसको नहीं कह सकते, but this is pressure head because in total head we have P over gamma pressure head plus elevation head plus velocity head, v square over 2g according to Bernoulli's theorem. तो इस Bernoulli's principle में 3 heads होते हैं, pressure, elevation and velocity. So pressure head is P over gamma and it is pressure expressed in terms of height of a fluid. Just like P is equal to, if you want to find the pressure at this particular point, then you just multiply specific weight times the total height above that particular point. Any question? जी बच्चे, any question? No sir, clear है. ये क्या कह रहे हैं भाई? सर जितनी हाइट होगी इतना प्रेशर होगा. P is equal to gamma H. वेरी गुड. अब इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक? कम है. और इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक? बहुत ज्यादा है. अब दोनों सारे लिक्विड का गैमा सेम है. ओके, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब प्रेशर फाइंड करेंगे, गैमा सेम है, गैमा H1, मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज फॉर 2 एंड दिस पॉइंट गैमा H2. सो ज्यादा हाइट है तो प्रेशर भी ज्यादा है. Okay. ये कौन बताएगा? ये क्या फिगर से क्या एक्सप्रेस हो रहा है? So we have 2 columns and at the center, at the lowest point, we have pressure equal to 50 kilopascal. Okay. अब pressure head क्या था? Pressure expressed in terms of height of fluid. Pressure head क्या था? Pressure expressed in terms of height of fluid. ओके. अब ये बताएं, स्पेसिफिक वेट वाटर का ज्यादा है या स्पेसिफिक वेट मरकरी का ज्यादा है? जी, specific weight of water is in terms of SI unit, it is 9.81 kilonewton per meter cube. Okay, and the specific weight,
specific weight of mercury is what's 133 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो किसका स्पेसिफिक वेट ज्यादा है? मरकरी का। वेरी गुड। मैंने कहा कि दोनों का प्रेशर सेम है। अगर प्रेशर से 50 ये P इज इक्वल टू gamma H, ये 50 है। So this is for water and this is for mercury। अब अगर यहां मैं वाटर में 9.81 पुट करता हूं और इधर 133 पुट करता हूं, टू मेंटेन द सेम प्रेशर हाइट किस में ज्यादा होगी, वाटर में या मर्करी में? वाटर में। So you can see that for water, in order to get the pressure of 50 kilopascal, we require a water, the height of water as 5.10. But for mercury, to achieve the same pressure, we need a height of only 0.376. ये इसकी कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हेवियर द लिक्विड, जिसका स्पेसिफिक वेट ज्यादा हो, लेस हाइट वुड बी रिक्वायर्ड टू गेट द डिजायर्ड प्रेशर। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही कंटेनर में 2-3 किस्म के फ्लूइड्स हैं, से फ्लूइड 1, फ्लूइड 2, फ्लूइड 3। अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रेशर एट बॉटम आप निकालें, बट क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट फ्लूइड्स हैं तो अलग अलग मुझे नहीं चाहिए। प्रेशर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर हाइट निकालें, तो कैसे निकालेंगे आप? मैं आपसे कह रहा हूं एट द लोएस्ट पॉइंट जस्ट फाइंड आउट द प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। प्रेशर हेड वाला फार्मूला लगाएंगे, P वेरी is गुड। equal to gamma H। प्रेशर हेड वाला फार्मूला लगाएंगे, बट इस केस में क्या करेंगे, से ये जो प्रेशर है इस फ्लूइड का, अभी मैं 2 कर देता हूं, 3 थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Say I have 2 fluids, 1 and 2, and I want to find pressure at this point in terms of water। ठीक है जी। मैं क्या करूंगा, से ये मर्करी है सॉरी कोई भी, ये Hg है और ये कोई और इससे भी हैवियर फ्लूइड है, से कोई भी चीज है, से इसकी 133 है स्पेसिफिक, इसकी 200 है। तो पहले मैंने फ्लूइड 1 का प्रेशर निकाल लिया, P इज इक्वल टू गैमा H, ठीक है। सिमिलरली और इसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया। जब प्रेशर आ गया मेरे पास से 50, और फिर उसको मैंने पानी के स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करके हेड ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली फॉर 2 I have found the pressure and I can easily transform it into water। एग्जाम्पल करेंगे फिर समझ आएगी। An open tank contains water 1.40 meter deep, covered by a 2 meter thick layer of oil having specific gravity of 0.855. What is the pressure head at the bottom of tank in terms of water column? What is the pressure head at the bottom of tank in terms of water column? अब ये वही चीज है जो मैंने आपसे पूछी थी। इस जगह पे हमने क्या फाइंड करना है, प्रेशर हेड H in terms of water। जी बच्चे कैसे करेंगे?
फिर पहले ऊपर वाले का प्रेशर हेड निकालेंगे, उसको वाटर में कन्वर्ट करके नीचे वाले के प्रेशर हेड से ऐड कर देंगे। वेरी गुड। PI is equal to gamma of oil times height of oil, यही होगा। गैमा ऑफ ऑयल निकाल सकते हैं। S is equal to gamma of oil divided by gamma of water। गैमा ऑफ वाटर आपको पता है, S से मल्टीप्लाई करें गैमा ऑफ ऑयल आ जाएगा। ठीक है जी, यस नो? यस सर। सो गैमा ऑफ प्रेशर एट इंटरफेस क्या आ जाएगा? गैमा ऑफ ऑयल टाइम्स हाइट ऑफ ऑयल। जो भी आंसर आया मुझे भी नहीं पता। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ, अभी लेट से ये हाइट ऑफ ऑयल मुझे 2 मीटर रिक्वायर है। अब मैंने इसकी जगह पे वाटर डाल दी है। ठीक है, आई जस्ट रिप्लेस्ड ऑयल विद वाटर। उसके लिए मुझे अब कितनी हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर होगी? तो जो प्रेशर यहां पे आया है से 16.78, the pressure at this particular point in terms of oil। अब मैं यही प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर ट्रांसफर करने लगा हूं। सो हाइट ऑफ ऑयल इन टर्म्स ऑफ वाटर, it would be PI divided by gamma of water। ठीक है जी, 16.78 divided by 9.81, the answer is 1.710 meters। ठीक है जी। अब क्योंकि ऑयल लेस डेंस है, इस वजह से इसकी हाइट ज्यादा है। ये इतना ही प्रेशर अगर मैं इसकी जगह पानी डाल दूं तो पानी मेरा कोई इधर तक फिल करेगा, 1.710। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? यहां तक समझ आ गया? यस सर। अब मैंने इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो टोटल हाइट मेरी क्या हो जाएगी यहां से यहां तक? 1.4 प्लस 1.710। ठीक है जी। सो टोटल हाइट वुड बी, वाटर कॉलम में क्या हो जाएगा? 1.710 प्लस 1.4। So the answer would be 3.11 meters। Any question? सर ये एस क्या है? S specific gravity है, this one। ठीक है सर, ठीक सर। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ओके, इसका एक और सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन 1 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सॉल्यूशन 2 जो है वो आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह करें, क्योंकि अगर 3 लेयर्स आ जाती हैं या 4 लेयर्स आ जाती हैं डिफरेंट सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट एटलीस्ट आपका यहाँ से क्लियर होगा। सॉल्यूशन 2 इज इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम, just find pressure in in terms of height with respective specific weight. So first part, gamma of oil into height of oil divide plus gamma of water into height of water. So you have the total pressure, and once you have the total pressure, just you can express in terms of height of water by just dividing it with the specific weight of water. So this is another solution, and which is relatively easy. So it's up to you whichever procedure you want to adopt. Okay. Any question in this example? सर अगर थर्ड लेयर आ जाती है, इन केस सपोज मरकरी आ जाता है, तो हम सेकंड वाले मेथड में बस प्लस
उसकी मतलब स्पेसिफिक वेट और हाइट कर देंगे तो बस टोटल आ जाएगा और फिर वाटर पे गैमा ऑफ मर्करी इनटू हाइट ऑफ मर्करी थर्ड लेयर है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रीजन का प्रेशर आ गया, तो फिर आप डिफरेंट एक्सप्रेस करते हैं फिर हाइट ऑफ वाटर, ठीक है। यस सर। Another example, the tank and drain pipe in figure 2.9 are filled with the gasoline and glycerine to the depth shown. अब टॉप पे गैसोलीन है क्योंकि वो लेस डेंस है, 2 फीट हाइट है उसकी, और ग्लाइसरीन की जो बॉटम तक आपने हाइट देखनी है क्योंकि प्रेशर जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे हाइट यहां से यहां तक 3 फीट है। Determine the pressure on the drain plug at C. Report the answer as the pressure head in feet of water. अब हमने वाटर की फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। Take specific weight of gasoline and glycerine as 45 and 78. Just like the previous example, we can find out the pressure in terms of different fluids, and once we have the total pressure at C, we can transform that pressure in terms of height of water. कर लेंगे सारे? जी सर हो जाएगा। Yes, sir. So pressure at C would be gamma of gasoline into height of AB plus, so we have the, you have the total pressure and just divide this total pressure with gamma of water to get the height of I mean pressure head expressed in terms of water. Okay, so this assignment I would send you the Word file because it will include more questions as well, but these 3 questions would be a part of your first assignment. Okay, next discussion is about different types of pressure. Just like you have heard about atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure, but there are some differences in between these different types. So, atmospheric pressure, ये क्या होता है? जी बच्चे कौन बताएगा? बहुत सिंपल है। The pressure exerted by a weight of air at any surface. Very good. आपकी बॉडी पे if there is no external pressure, तो सिर्फ हवा का प्रेशर है जो आपके ऊपर लग रहा है. So it is a force per unit area. So this is the definition of pressure. ये तो हमें पता चल गया प्रेशर है. Exerted by the weight of air above that surface in the atmosphere of Earth, or if we are dealing with some other planet, then that planet. So it is also called as barometric pressure. The standard atmospheric pressure is 101.325 kilopascal or 11325 pascals, or it is 760 millimeter of mercury or 14.696 psi. So this is standard atmospheric pressure. I think it's the temperature condition is 15 degrees Celsius. What would be the change in would there be a change in atmospheric pressure if the elevation increases? Yes, sir. अगर हम ऊपर जाएंगे, जस्ट लाइक एक जहाज एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा सर.
Very good. So as the elevation increases, atmospheric pressure decreases. Just like the same principle is, you can closely relate it to the hydrostatic pressure. And as the elevation increases from the bottom, the pressure decreases. Next is the gauge pressure. Its pronunciation is gauge, gauge, anything you like. Both the terminologies are used, but I prefer gauge. Gauge pressure. So it is the pressure measured with the help of pressure measuring instrument in which the atmospheric pressure is taken as datum. Okay, so whatever the just like the tire pressure, you measure the tire pressure. Any pressure in excess of atmospheric pressure, which you measure with some instrument, that is called the gauge pressure. And absolute pressure is the sum of atmospheric and gauge pressure. So the total pressure of summation of atmospheric and gauge is the absolute pressure. Okay. So, for example, if a fluid such as air, we have a container, and if air is removed from this container, सारी air remove कर ली, a vacuum would exist and the pressure within the container would be zero. जब air का pressure भी नहीं होगा तो बिल्कुल zero हो जाएगा. So this particular point is commonly referred as absolute zero pressure. ठीक है जी? So मैं इसको इस this point अगर इस कंटेनर में हमने air भी remove कर दी तो ये कौन सा point आ जाएगा? Absolute zero pressure. So any pressure measured above this value is referred as absolute pressure. Okay. Say this is the line of atmospheric pressure. Consider 2 points. One is A, another is B. So this value is gauge pressure. Okay. And if we measure a negative pressure, then we from the gauge we usually called as vacuum. So the amount of pressure, absolute pressure is so this one is the okay. Any addition of atmospheric plus gauge pressure is the absolute pressure. Obviously this pressure is positive gauge and this one is negative. So if you add atmosphere plus gauge, then it would be the absolute pressure. So P absolute is equal to P atmospheric plus P
गेज प्रेशर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? Any question in this figure? No, sir. Okay. So moving towards the slide. ये चीज समझ आ गई. So now different pressure measurement instruments. So there are many ways to measure pressure of a fluid. Just like barometers, Bourdon gauge, pressure transducers, piezometers, simple differential manometer. So we would study one by one. So first of all, barometer. Have you heard about this barometers? जी सर. Barometer, what is the function of barometer? जी बच्चे. Very good. To measure the atmospheric pressure. And how can we measure the atmospheric pressure? Just like in it's very simple instrument. We have one container filled with liquid and one small tube which is also filled with liquid. So immerse the end of the tube which is filled. Okay, इसको आपने inverted direction में इस container के ऊपर fill कर देना, रख देना. Immerse the open end of the tube filled in a liquid which is open to atmosphere. So this is open to atmosphere. Okay, ये point. ये पहले atmosphere में था, आपने tube insert कर दी. The liquid will rise in the tube if we exhaust air from the tube. If there is no air, हमने air यहाँ से remove कर दी. The liquid will rise in the tube. अब यहाँ से पानी जो है उसके ऊपर move करेगा. If all the air is removed and the tube is long enough, then only pressure on the surface is the vapor pressure and liquid will reach its maximum possible height y. ठीक है जी. यूजली वेपर प्रेशर भी बहुत नॉमिनल होता है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं. यूजली अगर हाई टेम्परेचर होगा तब वेपर्स जनरेट होंगे, अदरवाइज वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है. So if all the air is moved and the tube is long enough, then only pressure on the surface is the vapor pressure and the liquid will reach its maximum possible height y. So आप देखें ये पॉइंट O है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? P is equal to gamma y, यही होगा, प्लस P वेपर अगर तो कोई है. So PO is equal to gamma y plus P vapor. And this अगर ये एक ही लाइन में है तो इस पॉइंट का प्रेशर और A का प्रेशर सेम होगा. PO is equal to PA and this is open to atmosphere. तो जो भी प्रेशर इस पे लाई करेगा that would be equal to P atmospheric. Okay, so basically atmospheric pressure क्या होगा? जितने भी इस ट्यूब में लिक्विड रेस करेगा उसकी हाइट, when you multiply that height with the specific weight of that fluid, it will give you the atmospheric pressure. If vapor pressure is negligible, then P atmosphere it would be equal to gamma y. Okay, any question? No, sir. Bourdon gauge, as it's written gauge here. So any pressure above or below the atmospheric pressure, atmosphere इसमें gauge pressure की जो condition है, the atmospheric pressure we usually take it as datum. So the pressure above or below the atmospheric pressure may be easily measured with the help of Bourdon tube's pressure gauge. It consists of an elliptical tube. अब say this is a pipe, कोई भी water body है, pipe,
उसमें हमने इसको इंसर्ट कर दिया। क्या होगा, जितना प्रेशर इसमें ज्यादा होगा पानी लिक्विड ट्यूब में जाएगा, और अगर ये आगे से क्लोज है, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये this tube will tend to straighten up. इनिशियली ये पहले इस तरह थी, फिर कुछ टाइम बाद अगर प्रेशर मजीद बढ़ गया तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी, और अगर एक्सेसिव प्रेशर होगा तो इट विल transform to exact straight line. Okay, so tube changes its curvature with change in pressure inside the tube. Higher pressure tends to straighten it. The moving end of the tube rotates needle on a dial through a linkage system. अब ये रोटेशन जो है, एक कोई भी मैकेनिकली इसको हम लिंक कर देते हैं नीडल से, तो ये ग्रेजुएशन शो करेगी। स्ट्रेटनेस जितनी होगी उतनी ग्रेजुएशन ज्यादा होगी और उतना प्रेशर ज्यादा होगा। द सेम बचपन में प्रॉब्ली किसी ने ये यूज किए, यू जस्ट ब्लो द एयर, क्लास हो रही है, और फिर ये स्ट्रेट हो जाता है। किसने यूज किया कभी? इसको क्या कहते हैं यार, नाम क्या है इसका? इसको क्या कहते हैं? एनीवेज नाम मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। आप इसमें अपने मुंह से हवा भरते हैं तो फिर ये स्ट्रेट हो जाती है, ऐसे ही होता है। तो बॉटम ट्यूब का भी यही प्रिंसिपल है, जैसे इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये थोड़ी सी स्ट्रेट होएगी। ओके, ग्रेटर द प्रेशर मोर स्ट्रेट, the tube will get more straighten. Okay, so next is the piezometer column, or it's a kind of manometers as well. A piezometer tube is the simplest form of instrument used for measuring moderate pressure, and this tube is open to atmosphere. किसी भी पाइप में you just insert the piezometer. It consists of a long tube in which the liquid can freely rise without overflowing. The height of the liquid in the tube will give the pressure head directly. Okay. In terms of fluid, जो भी fluid होगा उसकी terms में अगर हम simply height measure कर लें, so it will give a pressure head directly. To reduce the capillary error, the tube error should be at least 0.5 inches. It's not error, it's diameter. Okay, the tube diameter should be at least 0.5 inches. So last we would study is the मैनोमीटर। मैं सिर्फ उसका कंसेप्ट दे दूं क्योंकि टाइम कम है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे। Manometer is an improved form of piezometer tube. With its help, we can measure comparatively high pressure and also the negative pressure. Following are the types of manometer: simple, micro, differential, inverted. So at the moment, we will focus on simple manometer. So basically, it's a U-shaped bend, just like this one. One end of which is attached to the gauge point, या जिस point पे आपने pressure measure करना है उसके साथ आपने attach कर दिया. And the other end is open to the atmosphere. Usually mercury is used in a bent tube which is 13.6 times heavier than water. Therefore, it is suitable for measuring high pressure as well. अगर तो इसमें water column होगा तो फिर उसका water height बहुत बढ़ जाएगी, तो इसलिए heavier liquid usually prefer किया जाता है.
so that it can bear high pressure. Procedure क्या है जी? Consider a simple manometer connected to a pipe containing a light liquid. Say in this pipe we have a light liquid, then this mercury under high pressure ये flow कर रहा है, ठीक है जी? The high pressure in a tube in a pipe will force the mercury in the left limb of U tube to move downward. This one is left limb and this one is right limb. What will happen जब इसमें pressure बढ़ेगा तो this will force the left limb mercury to move down. Okay? अब जितना डाउन होगा उतना ही यहाँ से राइट लिम्ब में फ्लूइड ऊपर मूव कर जाएगा, corresponding to the rise of mercury in the right limb. ठीक है जी? इस पॉइंट पे जब प्रेशर से पॉइंट 1 पे प्रेशर बढ़ेगा तो लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी की डाउनवर्ड मूवमेंट होगी और उतनी मूवमेंट राइट लिम्ब में ऊपर चली जाएगी। ठीक है जी? यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, so the horizontal surface at which the heavy and light liquid meet in the left limb is known as datum line. अब जहां पे भी ये मीट करेगा, ये इधर है या इधर है, मूवमेंट के बाद वो कौन सी पॉइंट हो जाएगा? डेटम। ठीक है? सो इन दिस फिगर इट्स रिटन z dash is the datum. So let h1 is the height of light liquid in the left limb above datum. अब इस पॉइंट से इधर तक ये h1 की हाइट है और लेफ्ट लिम्ब में h2 कौन सी हाइट है? Height of heavy liquid in the right limb above datum. Okay, so h is the pressure in a pipe expressed in terms of height of water. Means p over gamma basically. ये directly है, ठीक है जी? h is pressure expressed in terms of height of water or head of water, and this pressure is in this pipe. Say this one is h. Say specific gravity of light liquid is S1 and heavy liquid is S2. So pressure in the left limb above datum क्या हो जाएगा? H. अब ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है? ये datum है। datum से नीचे क्योंकि लेफ्ट और राइट में दोनों में हाइट बराबर है, से datum से नीचे है, ठीक है? तो जितना प्रेशर इधर से एक्ट कर रहा है पॉजिटिव, उतना इधर से नेगेटिव, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेटम के नीचे जितनी भी हाइट ऑफ फ्लूइड है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐड भी कर देंगे तो वो रीडिंग सेम आएगी। P is equal to gamma h, and if I want to transform this in ये कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड अदर देन वाटर, ठीक है? अगर मैं इसको वाटर के टर्म में लिखूं तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं? गैमा ऑफ वाटर टाइम्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक लिखा है? S इज इक्वल टू गैमा, और गैमा ऑफ वाटर होता है ना, तो गैमा किसके इक्वल हो जाएगा? S इंटू गैमा ऑफ वाटर। ठीक है? सो आई कैन से दैट प्रेशर in terms of head of water it would be equal to S times H. ठीक है जी? So pressure in terms of head of water it would be specific gravity of fluid, any fluid other than water, times the height of water, height of that fluid in the limb. इसकी समझ ना आई हो किसी को?
जी बच्चे, सर ये एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ओके, ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना, P इज इक्वल टू गैमा H। यस सर। गैमा बेसिकली जो भी फ्लूइड ऐसे मरकरी है तो वो मरकरी का गैमा होगा। अगर मैं इसको वाटर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें पता है, विच इज इक्वल टू गैमा ऑफ से मरकरी डिवाइड बाय गैमा ऑफ वाटर। चलो मैं इसको m लिख लेता हूँ, ठीक है। तो गैमा ऑफ मरकरी जो है इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी टाइम्स गैमा ऑफ वाटर। यस नो? यस। तो मैंने गैमा को रिप्लेस कर लिया गैमा वाटर टाइम्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। पी ओवर गैमा जो है ये क्या है? प्रेशर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, यही है जी। यस सर। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ से मरकरी टाइम्स हाइट ऑफ मरकरी या हाइट ऑफ जो भी लिक्विड है। सो P ओवर गैमा ऑफ वाटर को हम डायरेक्टली किससे रिप्लेस कर देंगे? S टाइम्स H, जस्ट लाइक इन दिस स्लाइड। H क्या है यहाँ पे? प्रेशर इन अ पाइप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। P ओवर गैमा ऑफ वाटर है यहाँ पे H, ठीक है जी। सो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब, अब इस पॉइंट पे P ओवर गैमा ऑफ वाटर है से दिस इज H। सो हमने क्या करना है? लेफ्ट लिम्ब ये है, राइट लिम्ब ये है, सबको ऐड अप कर देना है। लेफ्ट फोर्सेस कौन सी हो जाएंगी? H इन अ पाइप प्लस S1 H1। लेफ्ट लिम्ब की इक्वेशन क्या हो जाएगी? H प्लस S1 H1, ठीक होगा जी। इसी तरह राइट लिम्ब की इक्वेशन क्या हो जाएगी? S2 H2, H2। ठीक हो गया? समझ आ गई? सो pressure in left limb is H plus S1 H1. Pressure in the right limb is S2 H2. Since the pressure in both the limbs is equal, so we can just equate both these just like this one, and we can find the formula for H. ठीक हो गया जी, बड़ा सिंपल है। कोई क्वेश्चन किसी का? Similarly to measure the negative pressure, अब देखें इसमें लेफ्ट लिम्ब में इसका प्रेशर H है प्लस S1 H1 दिस प्लस H2, ठीक है जी। प्रेशर इन द राइट लिम्ब इज 0। बेसिकली है कि अगर नेगेटिव प्रेशर इसमें आएगा तो ये जो लेफ्ट लिम्ब की मर्करी की हाइट है वो अपवर्ड मूव कर जाएगी, तो इस केस में डेटम फिर ये बन जाएगा राइट लिम्ब का। बस ये एग्जांपल करते हैं फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। A simple manometer containing mercury is used to measure the pressure of water flowing in a pipeline. The mercury level in the open tube is 60 millimeter. This one is 60 millimeter. Higher than that on the left tube. If the height of water in the left tube is 50 millimeter, determine the pressure in a pipe in terms of head of water. देखें डेटम अब ये है। अब इस केस में हमने H फाइंड करना है, तो लेफ्ट लिम्ब की इक्वेशन क्या होगी? H प्लस कौन बताएगा? S1 S ऑफ वाटर, ये 1 हो जाएगी टाइम्स 50, ठीक है जी, इज इक्वल टू S2 ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13.6, ये 1 होगी टाइम्स 60। यहां से S निकाल सकते हैं? यस सर। ठीक होगा जी। इसी तरह आपने अगली एग्जांपल्स देख के आनी है, ठीक है। मैं ये जल्दी से लेक्चर वाइंड अप करके तो फिर मैं अगले लेक्चर पे जाऊंगा। क्लियर जी?
Any question? No, sir.